Hello guys, welcome back to the Two Ticket Guys with Divyang Pandya and Master Orator. अरे घंटा I would like to start off this episode with saying कि भाई I've been three Two, three two, की two. two. Yeah, so what I predicted in the last fight was in the last episode was कि Izzy will win by knockout. First time he predicted about Jake Paul. Jake Paul. वो precise नहीं था उतना but Precise नहीं था, still बात Yeah. बराबर था कि if he fights real fighters तब देखेंगे क्या होता है. Precise line, verbatim तो नहीं है बोला था. And that happened. फिर अभी फिर से इजी के साथ ये सेकंड एपिसोड में ऑफ बियॉन्ड द ऑक्टागन हमने बात किया था अबाउट इजी वर्सेस परेरा वेर यू सेड कि इजी विल आइदर विन बाय नॉकआउट या फिर फोर्थ राउंड में एंड वी ऑल या तो डिसीजन जाएगा हाँ या डिसीजन तो डिसीजन हाँ जाएगा डिसीजन but जाएगा I mean there were a lot of analysts on YouTube and internet claiming कि भाई Izzy will try to take him down, he will try to like submit him and shit like that. But I knew for a fact कि अगर ये होने वाला है तो it is going to be a knockout or it'll be a decision win. लेकिन बहुत लोग इंटरनेट पे भी अग्री कर रहे हैं कि शायद फॉर सम रीजन अगर उसने मार नहीं खाया होता ना परेरा ने तो डिसीजन उसके फेवर में जा सकता था क्योंकि फाइट डोमिनेट किया था परेरा ने भी कौन सा फर्स्ट या सेकंड वाला? Which one are you talking about? The second सेकंड परेरा 2 स्पेशली सेकंड राउंड थोड़ा बहुत इंटेंस भी था I mean, it's good that you brought it up because like the whole fight, इसके अंदर the thing is that now you know that Alex is going to fight in 205, right? देखो मालूम पड़ा वो? पड़ा I मैंने told you भेजा about था it. अभी नहीं, the thing is कि I told you about it कि last episode में मैंने बोला था that I don't know how he's fitting into this He should be a 185 heavyweight category, fighter. but he is definitely a heavyweight fighter. And what I really took away from the fight was जब भी उनका face off हो रहा था तभी did you see how depleted Alex was? फेस ऑफ के टाइम में Yes, face off के time. He was literally like depleted. And I think this is one of those things that really affected him in the fight. But अभी do you want to break down the fight? I mean, it was your first this thing जो तूने proper बैठ के देखा है match. You can sort of analyze it. सी अकॉर्डिंग टू मी इजी वर्सेस परेरा जो हुआ ना फर्स्ट राउंड जो था वो थोड़ा बहुत ठंडा था लेकिन ये मैंने देखा कि इस मैच में इजी ने बहुत सारे परेरा के किक्स को बहुत डॉज कर लिया Dodge किया? डॉज मतलब अच्छा ठीक है, let you finish. बाद में मैं बताऊंगा. डक किया छूट गया Although उधर guys, से I would just like to clarify कि ये बहुत बड़ा casual है. I'm trying to turn him into a real one, but थोड़ा hard time हो रहा है. Continue. क्या बोल रहा है? कंटिन्यू तो उसे लेग तू बोल रहा है डॉज किया बहुत सारे. हाँ 3 टू बी प्रिसाइज और वो तीनों की तीनों शक्ल पे आ रहे थे और इजी ने ऑन दी अदर हैंड जब भी वो किक्स कर रहा था उसको पढ़ भी रहे थे और दो इजी को बहुत बड़े ब्लो पड़े एंड में जब ही वो हिज बैक वाज अगेंस्ट दी वॉल तब उसके जब हाथ ऊपर थे तब दो बहुत बड़े ब्लो उसको पेट पे पड़े विच आई थॉट कि थोड़ा उसको अफेक्ट करना चाहिए था The thing is that Izzy is playing it off as if कि ये पूरा plan था and he was trying to the whole George Floyd thing वो plan कर रहा था कि वो रुका हुआ है and then he's taking the blows फिर वो right opening के लिए रुकेगा. But I don't think so that's how it went, but he's trying to sell it उस हिसाब से. So what I'll tell you, okay, तो मेरे को बता कि कितने leg kicks like तू बोल रहा है अगर dodge किए हैं कितने leg kicks है जो Alex ने land किए उस पे पूरे 2 राउंड के अंदर जितना भी fight चला हुआ. नहीं मैंने डॉज ही की नहीं 26 and 16 of those were on the this thing. नहीं काफ नहीं जब perennial nerve वाला ये front leg. The thing उसके is weak point पे yeah. The thing is कि did you see how like Izzy was changing his stance from orthodox to like वो क्यों कर रहा था वो क्यों कर रहा होगा उसके पेरिनिन नहीं the thing is वो सबको ये बोल रहा है कि I was doing that because like उसके लिए वो और difficult हो रहा था when I would turn into like southpaw तो उसके लिए land करने के लिए difficult कर रहा था but the thing is the real reason why he was switching positions stance was कि उसका जो front leg था left वाला जो उसका front leg था was being like butchered by this guy उसने Hammered down. 16 leg strikes उसने land किए exact वही position पे and all of those were hurting him and इसके लिए वो constantly like dodge कर रहा था not only just to make
this guy Alex uncomfortable, but at the same time to protect his leg because वो legit like पड़ते हैं जब वो leg kicks उसके तो you can hear the noise. वो बिफोर दिस मैच आई यूज्ड टू अंडर एस्टिमेट लेग किक्स काफी पैर पे थोड़ा आई But इनिशियली आई थॉट कि वो बैलेंस हिलाने के लिए वगैरह कुछ के लिए होगा लेकिन फिर पता no, those stop you from moving forward. But like this is where the see I told you like Izzy when he's being creative. Yeah, Izzy is one of those fighters now just Joe who can like put pressure on himself and can get away with it. And it can really like benefit him. Not a lot of fighters can do it. अगर like कोई और fighter होता जिसके ऊपर इतना ज्यादा pressure गिरा होता तो like he would have folded definitely. But what happened to Izzy प्रेशर was यू आर टॉकिंग अबाउट द खुद पे जो उसने प्रेशर स्टोरी लाइन वाला ना everything from the press conference to the memes on the internet to people like calling him out and like the hate that he was receiving. The thing is कि इतना ज्यादा प्रेशर अगर कोई फाइटर पे गिरता है तो it is very difficult for him to perform. On the other hand, Izzy is the kind of guy जो खुद पे प्रेशर डालता है. He puts himself in those positions and like वो उससे बाहर आता है. And this is what we saw even with the dog collar. तेरे को मालूम है जो dog collar जो तू मेरे को बोल रहा था पहन के क्यों आया? लिवर बेल्ट लग रहा था वो सीधा सीधा नहीं, it was पे आई सॉ गले पे लिवर बेल्ट मेरे को भी चाहिए now, so coming back to the whole dog collar thing, like what do you think उसका significance था वो dog collar का? from what I saw in the press conference as he said कि because I'm a dog and I'm going to be unleashed नहीं like it's like हाँ definitely that वो था उसका significance but the movie like Unleashed करके है जिसके अंदर you have like this actor Jet Li उसका पूरा significance ही ये है कि it is to control the beast in you and once like the dog collar is out you know you have like unleashed the beast so that's the kind of thing that he was going for so that's what I'm telling you he is the kind of person who puts like a lot of pressure on him and ये उसने उसके post fight जो reaction वो करता है उसमें भी उसने acknowledge किया था that like when I see this guy while looking at himself he's like कि I know this guy but I rarely see him you know he gets into that mental space जहाँ पे there's so much pressure on him and he definitely delivers under pressure he's one of those guys and he definitely did this ये time who apart from Izzy do you think वो ऐसे मतलब एंटी चीजें करने वाला है एंटीक चीजें ऐसे यू हैव योर हेनरी कोचर थोड़ा केंड्रिक वाइब दिया मेरे को सुन के पता है सच्ची नहीं देयर आर कुछ किधर का कुछ रेफरेंस लेके आया भाई that's what I'm telling you Izzy is the internet kid like last fight में भी that's what and it can be a drawback and it can be like a really you know good thing for you when you win but when you're losing you know you constantly see yourself like on the internet doing shit like this so I think it comes back to the whole thing that he is one of those guys जो deliver करता है pressure के अंदर you saw एंड में उसका सेलिब्रेशन बो एंड एरो वाला bro bow and arrow वाला वो तो फिर भी ठीक है did you see what he did to Alex का kid so Alex भाई उसका भी इनिशियली समझा नहीं कि क्यों किया लेकिन वो कैमरा को देख के करता तो एक बार समझ आता कि सबको बोलना था हाँ ये ऐसे गिरा लेकिन फिर पोस्ट में जब उसने बताया कि इस किड इज एन एसोल ये वो like before like उसके पहले जब बच्चे को भी नहीं छोड़ा no भाई but it is a good thing I तो stand by it भाई people should be like you know accountable to उसके their बच्चे का actions भी ऐसा वीडियो आया था पता भाई है imagine ये क्या like anime origin story होएगा if like his kid starts like boxing and shit हाँ ना gets into MMA like भाई but the thing is that imagine कितना गंदा वाला childhood trauma उसको मिल गया रहेगा ये अरे वो रो रहा था वही बोल रहा हूँ, उसका वीडियो आया था बाहर की वो रो रहा था बच्चा लेकिन गुड फॉर परेरा आई गेस परेरा का ये सीन हुआ रहेगा कि सिंस इज प्लानिंग टू गो टू 205 तो उसके वजह से उसका मेंटल स्टेट थोड़ा हिला हुआ रहेगा no that's not the thing he wasn't like planning on doing it इट्स एक वो उसके दिमाग में था द थिंग इज दैट वो आया ही लाइक एमएमए के अंदर ट्रांजिशन ही उसने इसके लिए किया था बिकॉज ही वांटेड टू बीट लाइक इजी आफ्टर दैट इंटरव्यू लाइक उसका पूरा इजी लाइक वाज टॉकिंग शिट इधर भी आके भी उसका ध्यान कभी भी यूएफसी पे एज अ होल दिस थिंग आया नहीं था कभी इट वाज ओनली आफ्टर लाइक इजी हैड दैट इंटरव्यू विद यू नो एंड दैट्स व्हाई ही ट्रांजिशन इनटू इट एंड अभी हो गया सो लाइक कमिंग बैक टू इट लाइक व्हाट डू यू थिंक इसका आउटकम क्या होगा इसके बाद व्हाट डू यू थिंक इजी इज वाज परेरा वाले का या व्हाट इज दैट तो खत्म होगा बात क्योंकि वो भी अभी You don't see a rematch. नहीं व्हाई वुड
परेरा गो फॉर अ रीमैच, वो क्लियरली एक तो 205 में शिफ्ट कर रहा है, See, क्यों that's the लेकिन? reason. That's the reason why you're a fucking casual, bro. See, the thing is, I see a whole storyline इसके बाद. देख, इमीडिएट रीमैच वैसे भी होने वाला नहीं था. हम्म रीमैच इमीडिएट कब मिलता है? जब इधर लाइक थोड़ा डिसीजन पे लाइक जाता है, या तो फिर देयर इज अ चांस कि उसने 4 या 5 राउंड उसके सामने गया एंड देन केओ हुआ एंड ही वाज डोमिनेटिंग प्रायर टू दैट. बट व्हेन यू स्टॉप समवन दिस अर्ली, एंड दिस एविडेंटली, तो रीमैच का क्वेश्चन नहीं होता. हम्म बट नाउ व्हाट यूएफसी कैन डू इज, सी 205 के डिवीजन का चैंप कौन है? जमाल हिल. हिल, हाँ। हाँ, आई सी लाइक दिस गाय बीटिंग हिम इजिली, इजिली. एंड इमीडिएट रीमैच अच्छा है नहीं हो रहा है because what I think the storyline is going to be is Alex like goes to 205, becomes a champ. हम्म फिर in a year or two, there's a champ versus champ fight with the whole storyline because Izzy ने भी 205 में transition करने का कोशिश किया था, but he was defeated in 205. So now you have like the whole storyline built up that these guys have like rivalry. This guy tried to transition into 205, but he couldn't fit in. Now this guy is champion, and you have like the champ versus champ fight. And this time it will be in favor of Alex because वो ज्यादा natural body weight पे रहेगा उसके. हम्म ये टाइम उसको इतना ज्यादा डिप्लीट करना नहीं पड़ेगा. So हम्म I definitely see this whole storyline playing, you know, in a year or two. लेकिन ये बात भी पहले समझ नहीं आ रही थी व्हेन एवरीवन सेड कि परेरा इज मोर लाइक अ हेवीवेट फाइटर। I told you, भाई कि उसका हाइट देख, उसका फेस देखा है तूने कितना बड़ा हाँ, दिख रहा था. वही वही वही। कंपेयर दोस फेसेस, लाइक यहाँ पे ना प्लीज इधर लगा ले, कंपेयर लाइक इसका फेस एंड एलेक्स का फेस. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस भाई. एंड लाइक दैट्स द रीजन व्हाई ही अपीयर्स टू बी टॉलर देन इजी, जबकि वो लोग ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट के ही है. मेरे को अभी अचानक से ये एक चीज याद आया व्हाइल आई वाज वाचिंग एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली यूट्यूब पे का। आई केम बाय दिस वीडियो अबाउट सम गाय, किसी ने वीडियो बनाया था कि व्हाई यूएफसी इज फेक। भाई यूएफसी इज फेक. हाँ, उसने बोला यूएफसी इज फेक, यूएफसी इज स्क्रिप्टेड। मैं देखा भाई क्यों, क्योंकि फिर से मेरे को डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं देखना था। तो आई सॉ वीडियो, और वो वीडियो में कुछ भी बोल रहा है कि भाई इतना पिलो पंच दिया इसको फिर भी ये नॉकआउट हो गया ये वो। और उसके बाद एंड में द मोस्ट हिलेरियस कमेंट मैंने जो पढ़ा था, नीचे लिखा था, टेल अस यू लॉस्ट योर बेट, लॉस्ट द मनी यू बेट विदाउट टेलिंग अस यू लॉस्ट द मनी यू बेट। नहीं, द थिंग इज द फाइट वाज गोइंग लाइक एलेक्स के वे में. 100% इट वाज गोइंग एग्जैक्टली। एलेक्स के वे. बट लाइक इजी जो वो अभी प्ले लेकिन वो कर रहा है. इजी, अगर वो स्प्लिट सेकंड में अगर वो नॉकआउट नहीं होता ना, नो आई स्टिल इसके फेवर में रहता है एलेक्स के। no, that's the thing. Like Izzy was completely against the cage. Okay. हम्म What Izzy did right was लेकिन उसने. लेट्स कंपेयर साइड बाय साइड, ठीक है? एलेक्स वाज डोमिनेटिंग द सेकंड राउंड Hmm. अच्छे से। It wasn't. I mean, it was pretty equal, to be honest. नॉट प्रीटी गुड, लेकिन नहीं, थोड़ा I think it was इफ equal. यू गो फ्रॉम परेरा टू इजी का स्पेक्ट्रम, इट वाज मोर टुवर्ड्स परेरा का साइड। इजी मतलब भी ले रहा था लेकिन इजी इजी दो बार पता है केज के आगे था। हाँ, that was his whole game. He was preparing for that. तूने उसका ये ट्रेनिंग वीडियोस नहीं देखा? नहीं, He's ट्रेनिंग में नहीं। actually doing that shit, and he was sort of planning it. बट वो जो मैं बोल रहा हूँ कि वो एक्टिंग कर रहा था, उसके बाद लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ही स्टार्टेड सेइंग कि ये सब प्लान था, ये वो था. हम्म द थिंग इज दैट ही सॉर्ट ऑफ वाज ट्रेनिंग टू डू दैट, हम्म बट एट द सेम टाइम व्हेन दैट एक्चुअली हैपेंड, जब भी वो केज के अगेंस्ट था और उसको पड़ रहे थे शॉट्स, तभी ही वाज एक्चुअली हर्ट. ऑल्सो लाइक लास्ट द टाइम। थिंग इज, नहीं, अनदर थिंग, कि जब भी एक्चुअल में वो हो रहा था एंड एलेक्स हम्म वाज लैंडिंग द पंच, हम्म उसका लेफ्ट हुक जो लेफ्ट हैंड था, जो प्लान कर रहा था लैंड करने को, कंप्लीटली यहाँ पे था. एंड इजी सॉ दैट. हम्म एंड वही टाइम पे इजी ने वो ओवरहैंड लाइक पंच लैंड किया. एंड थिंग इज, एलेक्स के ऊपर ओवरहैंड पंचेस बहुत लोग ने लैंड कर चुके हैं, एंड इजी आल्सो हैज डन दैट 3 टाइम्स. ये थर्ड टाइम था एंड इट वर्क दिस टाइम. बस हम्म इसके पहले भी उसने सेकंड राउंड में लास्ट फाइट की किया था, व्हेन ही गॉट रॉक्ड एलेक्स, और फिर वो फाइट रोक दी थी, मतलब राउंड बंद राउंड हो गया. खत्म हो गया था। या कितने लोग ने बोला कि वो सेव्ड बाय द बेल? या आई मीन ही वाज सेव्ड बाय द बेल, बट दैट जस्ट हैपेंड अगेन, और वो लाइक उसने पकड़ लिया था. इस बार भी पता है क्या, राउंड खत्म होने वाला था, थोड़ी देर थी, ज्यादा देर नहीं थी। हाँ, या दैट्स व्हाट इट हैपेंड. सेम हो जाता वरना। लेकिन आई थिंक अगर ये राउंड चलता और अगर एलेक्स अगर नॉकआउट नहीं होता, तो देयर वाज अ चांस कि डिसीजन होता तो उसके फेवर में हो सकता था। आई मीन
See, the thing is, last fight maybe what we saw was कि Alex was active like starting of the fight. Big the thing is कि वो इतना depleted था. I don't think so. He would have even gone to like round 4 या round 5. तब तक वो completely dead हो चुका होता भाई अंदर से. And that's the reason why I said कि वो fourth round के अंदर like he'll knock him out because I thought like again he'll get sluggish and similarly उसको ये मिलेगा and he'll land the overhand this thing because landing overhand punch on Alex has become like क्योंकि उसको already ऐसे stop कर चुके हैं लोग and what I think the reason was कि Alex has less experience with MMA gloves. हो सकता है, हो सकता है. Boxing gloves are bigger हम्म and they can have like softer land on you. So उतना ज्यादा तेरे को सीधा तो knockout नहीं हो जाता. You know, they have sort of, I mean, you can still like knock people out, of course. But what Alex had like experience उसके पहले was कि ये पंच से मैं ऐसे knockout नहीं होता हूँ कभी भी. I think that was one of the reason why like Alex took it. maybe also लास्ट टाइम जैसे हमने बात किया था सेकंड एपिसोड में बियॉन्ड द ऑक्टागन के, इजी इस बार wasn't fearing the left hook उतना. Yeah, that's what I told you. He was a complete different fighter. But that's what I meant when I said कि you know when he puts himself in those situations, you know वो उसका mindset वैसा बन जाता है. He was fearless ये fight के अंदर आके. You know, and that's the whole thing. जो dog collar था, the way he walked out, he was living by the factor कि भाई if you either you live by the sword or you die by the sword. एंड उसने वो जब भी केज के अंदर वो एंटर किया और उसका जब भी ये अनाउंस हुआ तभी ही वाज लाइक आई एम नॉकिंग यू द फक आउट लाइक उसने ऐसा चू करके उसके सामने बोला था एंड दैट्स लाइक यू नो द पार्ट वेयर ही किक्स दैट मेंटालिटी इन हिम इजी वो कॉन्स्टेंटली आगे जा रहा था लाइक इमेजिन भाई दैट विल पावर दैट गाय हैज कि उसको ऑलरेडी वो 3 बार हरा चुका है एंड उसके बाद भी 2 बार तो कितना गंदी तरीके से नॉकआउट किया है एंड स्टिल यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड यू आर अटैकिंग हिम you know that takes a lot of this thing. courage. Yeah, so coming back from अरे we are talking about Alex being not in form or थोड़ा sluggish. We can also talk about Masvidal. भाई अभी it was coming like it was coming वो अच्छा है उसने high end पे उसने नोट पे खत्म किया उसका career. I didn't see it like going any forward. I mean it's good that he ended it. There's nothing more to talk about honestly. Like he gave us like good enough you know this thing moments to cherish and it's good that he ended it on a high note. लेकिन उसका मैच भी देखा ना, बर्न्स वर्सेस मैसविडाल, बर्न्स क्लियरली डोमिनेट कर रहा There है. was no conversation about it. इसके लिए like I was talking to someone the other day about this whole thing, and I was like there was no chance. Like it was pretty obvious कि Masvidal ends it, and I sort of knew कि ये खत्म होने वाला है in future. Like Masvidal is going to retire probably in next 2 or 3 events, but मेरे को ये नहीं मालूम था इतना जल्दी वो कर देगा. But it's good that he did it अभी. I don't see him like winning against any of the other fighters in this thing. लेकिन इवन उसका करियर स्टार्ट होके भी अभी वो कितना 39 कुछ है ना. एग्जैक्टली भाई उसने 2 बार तो अपना करियर रिवाइव किया है और कितनी बार कोई ये कर लेगा 39 मेरा पप्पा 40 के भाई. एग्जैक्टली पप्पा की उम्र का आदमी है, Yeah. लेकिन स्टिल उसकी उम्र के हिसाब से अच्छा मैच था. ब्रो तुझके लिए तो बोल रहे जॉन जोन्स के लिए क्या बोलेगा नहीं Going यार, back to जॉन the जोन्स John अगर Jones thing. चल तू बोल तेरे हिसाब से इफ यू वुड हैव अ क्या बोलेंगे, एक एक उसको क्या बोलते हैं यार, एक वर्ड रहता है अपना, अपनी टीम बोल दे. Pound for pound. What are you talking about? यूएफसी के व्हाट डू यू थिंक आर द टॉप 5 तेरे हिसाब से? Pound for pound. It's funny how you like coming to this whole topic. UFC just released उनका pound for pound list. Do you know about that? नहीं. देख खुद UFC का pound for pound search कर. Tell me if you agree with that because I have a lot to say about it. What do you think कि ये list में क्या like what would you change according to you? Like top 5 के अंदर ही देख top 5 या top 10 के अंदर if you want to go really deep. नहीं टॉप 10 नहीं. मुझे लगता भी नहीं देखो top 10 के सबका नाम मालूम रहेगा. नाम बता रे. एडवर्ड्स को मैं क्यों रखूं? रहने दे, रुक.
सोच रहे थे वोल्कानोस्की। आई डोंट थिंक वोल्कानोस्की को यहाँ पे रखना है। Bro, what are you saying? भाई इस्लाम इसको मार दिया। Bhai, what are you saying? Islam has just one title defense. और Islam is वो like ऊपर आएगा। Islam is the shittiest champ अभी तक। वो किधर है? टाइटल डिफेंड एक किया उसके बाद किधर है अभी? कोई न्यूज आ रहा है उसका टू फाइट? भाई, हाउ आर यू अ चैंपियन if you're not defeating, like you're not constantly like fighting your contenders? And Alex almost defeated this guy. And chances are कि अगर तू ठीक से उसको एनालाइज करेगा तो there are a lot of people who say कि Alex did won that fight. अभी बोल रहे भाई। Exactly, and Alex has like more title defense than him. तो वो तो perfect है. For top two are like perfect. उसके बाद what I think is जो change होना चाहिए, Leon तेरे हिसाब Edwards. से? Okay, so मेरे हिसाब से John Jones perfectly like up there. Alexander like Volkanovski up there. Uncle Alex 100%. Islam से मेरे को problem है. I think he should be on the fifth one. Leon Edwards, I don't honestly I don't mind like Leon और Islam का ऊपर नीचे हो जाए तो भी, but I think Izzy has to be on the third position. 100%. बाकी I have a lot of problem with all the नीचे वाले से, क्योंकि टॉप like 5 के 8 बाद to वाले। 8 to 15 वाला मेरे को like नहीं समझ में आ रहा है honestly उन लोग ने क्या सोच के किया. But if you're talking about the top 5 one, I think John Jones 100% like pound for pound number one contender. Alexander again second. I have no problem with it. 100% agree with it. Islam and Leon कैसे भी ऊपर नीचे हो जाए I don't really care. But Izzy has to be on the third. You know how ये works, right? नहीं। कि जो भी champ है, उन लोग ने कौन से contenders को fight किया है and how many times they have like defended their title. Islam has just defended his title just once. So that's the reason why मेरे को वो नहीं चाहिए top four. नहीं बराबर है। इजी ने कितने लोग के सामने विटेकर, Exactly, like रोमेरो। भाई रोमेरो को उसने हराया। जोएल रोमेरो का तो सबसे ज्यादा बोरिंग फाइट था भाई वो लेकिन तो छोड़ बेटा. Joel Romero is like kind of a punching bag now in the whole division. पंचिंग बैग। Honestly, right? Like everyone comes in and like, sure, that's a. I mean, he's a great guy. मेरे को honestly अच्छा लगता है as a fighter. But I think he's like a gatekeeper now of the middleweight division. Also coming to the new beef introduced by Izzy. Since you brought up Izzy shouldn't be on that list, मेरे को याद है। Izzy Izzy shouldn't be on that list. Izzy अरे should अरे be higher on that list. higher on that। So the whole beef started with like Izzy coming into the conference and saying कि like he'll drag his carcass Drag his carcass across Africa। across Africa. So Drake like भाई इसके पहले वो क्या नाम है डुप्लेसी क्या? He doesn't even look African भाई। that is one of the most recent things that you've said. अबे तो काला होना जरूरी है African होने के लिए like अरे what the fuck bro. No, so उसका whole point was he did that belt really come to like Africa, because भाई तू अफ्रीका में रहता भी नहीं है, तू रहता इधर है न्यूजीलैंड के अंदर है. न्यूजीलैंड। Then how the fuck are you repping like Africa? You do not train in Africa. You do not live here in Africa. You do not bring तू your money to नाइजीरिया खाली एक Africa। डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गया था and then after that you've never visited your country. लेकिन So उस हिसाब से उसकी बात भी बराबर लगती है ना। उसकी बात बराबर है, but like it definitely triggers Izzy. See, the thing is when you're not high on the this thing list in UFC कि तू pound for pound या फिर वो weight category में तू top 5 top 6 top 7 में नहीं आ रहा है, तो this is one of those ways how you can really make up a fight. You can start this beef. But ये तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उसके बाद वो ट्विटर और फेसबुक पे पोस्ट भी करता है of his picture with like the whole stadium behind him, and he says that like I have the whole Africa behind me. You go and have your like vacation in New Zealand. it is sort of true, and ये नया स्टोरी लाइन शुरू हो सकता है। नहीं, of course हो सकता है, because Drake Duplessis is one of those guys जिसको like Izzy ने fight नहीं किया. All the top 5 contenders जो भी है, Izzy has already fought them. So I think if Drake like climbs up the chart, sort of fights one or two good fights with the top 5 guys, I think I You definitely probably think can this see in there's World Cup there's fight। definitely a storyline. There's definitely a story.
If not that, I would want like Robert लेकिन Whittaker का. फिर सॉर्ट ऑफ दोनों की मतलब इज्जत पे बात है, वैसा है दोनों के लिए एक, That's why it makes like such a good. क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं रैपिंग भाई they अफ्रीका, can और ये बोल literally. रहा है यू आर जस्ट क्लेमिंग टू बी रैपिंग अफ्रीका। Yeah, exactly. Fight for Africa. ये पूरा उन लोग का बन सकता हाँ है ना, भाई कैंपेन. पता चला उसका मैच सोमालिया में रखा, No. मायामी टू सोमालिया। But like again, why I think this fight can happen is कि UFC has been thinking about having this thing in Africa. उन लोग का एक या दो को event. So I think this definitely makes a बिग storyline. जीज ऑलवेज राइट। टॉकिंग अबाउट यूएफसी के हमने जो बात किया, वी हैव अनदर मैच कमिंग अप अबाउट यूएफसी फाइटर, लेकिन नॉट इन यूएफसी, नेट डियाज। Retired UFC fighter. Retired UFC fighter. या रिटायर्ड यूएफसी फाइटर नेट डियाज और जेक पॉल। एमएमए फाइट की बॉक्सिंग फाइट है, मैं ये Boxing देखना है. भूल गया। Boxing. Of course boxing है. जे के भाई फिलहाल तो बॉक्सिंग ही करेगा. नहीं, There's a उसने news. अनाउंस किया था ना Yeah, बीच में there's a कि news. एमएमए But ट्रांजिशन but कर रहा है। वो मैं बताऊंगा तेरे को. वो I think I have a lot to say about. So like he loses to a legit boxer. What's the next thing that Jake does? Coming to his old niche of retired UFC fighters. Again. And like if any of you all bet like भाई अपना घर पूरा गिरवी रख के पैसा लगा दो जेक पे, because 100% Jake is taking this. The thing is Jake ने already like Silva को हरा दिया, and Silva was a better boxer than like Nate. And I think Nate के लिए cash grab है खाली, उसको like पैसा मिलेगा just to show up. He'll show up. The thing is, it will be a good fight to watch. Entertaining होगा 100%. But I don't see Jake like losing to this guy, Nate. Because like no disrespect to him, उसका boxing, I mean, उसका boxing नेट भी है, Nate का अच्छा है। नहीं, the thing is Nate का boxing is so overrated. कि Nate Nick Diaz का actually ज्यादा better था boxing उससे, and Nate was just slower, but he was a very large volume puncher, and that's the reason why people think he's like a good ऑल्सो boxer. पंच से मेरे को बहुत ज्यादा ऑफ टॉपिक है, लेकिन मेरे को अभी याद आया, ये बर्न्स वर्सेस मास्विडाल जो अपन ने देखा था, उसमें बर्न्स गिलबर्ट बर्न्स का जो पंचेस थे ना, वो मेरे को देख के ना सीधा सीधा मेरे को केएसआ याद आया। एकदम ओपन पंचेस। भाई अभी अरे पता है, his पता है, fighting style. केएसआई भी अभी बदल गया, लेकिन वो देखा ना, देखा मैंने मैच, और मेरे को पहला चीज दिमाग में आया, ये केएसआई ऐसा मार रहा है। This is the reason why he's a casual, right? I'm going to point out every single time he says stupid shit like this. Chal, coming back to ट्वाइस। yeah, coming back to Nate versus Jacob fight. I think एंड आई डोंट थिंक नेट इज वन ऑफ दोस की जो मतलब सिर्फ बोलेगा this कि is फाइट this is कर। just a setup fight for हम्म। him to transition into MMA. हम्म। What I think is going to happen is, which again we predict. I don't think so. This is even a prediction. I mean, this is pretty much like bound to happen. कि Jake is going to transition into MMA. पहली fight होगी इसके अंदर. He convincingly will beat Nate. फिर Nate उसको call out करेगा और ये fight के लिए बुलाएगा MMA के लिए. And that's how he transitions into it. हम्म। Because this makes a better storyline. Like again, हम्म। अगर हर बार हारता हारता रहेगा, he wants to end his boxing career on a higher note. I mean, he will fight boxing fights इसके बाद भी. I don't really know, but he wants to start his MMA career इस हिसाब से, और वो ऐसे ही होएगा. And that's how he transitions into MMA. लेकिन ये ऑलरेडी अनाउंस था कि वो एमएमए में आने वाला है, जेक का। हाँ, but ये तो boxing match है ना. हाँ, तो हाउ डज दिस कनेक्ट टू दैट? वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है भाई कि वो आने Nate, वाला है। हाँ, but कैसे आएगा? That is important, right? Nate is one of those fighters who will bring so many eyes to it. समझा। And also, he's a retired UFC fighter. MMA experience है उसके उसको. नीच के हिसाब से। MMA experience है उसको. He has like really good OG following, people who really like him. And if this is how he transitions into MMA, so it's definitely good for him. It makes like a good storyline, and I think that's what he is going for. मे बी, लेकिन ऑल्सो तीसरा प्रेडिक्शन वी आर होपिंग, इस बार मैं पैसा लगाने वाला हूँ, किस पे? डियाज हारेगा उस पे। यस हारेगा उसपे. अच्छा वो तो 100% ठीक है, वो तो अभी तक दो प्रिडिक्शंस दिव्यांग ने किए। फर्स्ट अबाउट जेक पॉल कि वो प्रोफेशनल फाइटर से
हारेगा अगर कभी फाइट किया तो, वो भी सेमी प्रो से हारेगा। दूसरा प्रिडिक्शन अबाउट इजी वर्सेस परेरा, जो अगेन राइट था। तीसरी बार में अपना पैसा लगाना अब। भाई कैमरा कट करो, ये डिक्राइड करने वाला है मेरा अभी। इतना सर्वे चढ़ा रहा है मुझे। या कमिंग बैक टू द सो अनदर लाइक बॉक्सिंग मैच जो अभी होने वाला है, गार्सिया और गार्सिया वर्सेस डेविस। डेविस। डेविस का पहले आई नो टैंक टैंक अभी कर रहे सब उसको। टैंक टैंक कर रहे हैं अभी उसको। what do you think? चल, tell me like नहीं ब्रो, आई क्या? डोंट थिंक एनीथिंग। देखो I अब don't think तक anything. He's running a fucking podcast and he doesn't think anything. Yeah. अभी तक जितना मैंने पढ़ा वढ़ा ना, व्हाट आई नोटिस दिस कि सब लोग एक ही चीज पे बात कर रहे हैं कि डेविस को इसका लेफ्ट हुक नहीं पड़ना चाहिए। The thing is that okay about Garcia, I don't hate Garcia. He's a good kid. मेरे को कोई उससे वो नहीं है. But the thing is कि he is an incomplete fighter. उसके लास्ट 10 फाइट्स उसमें से 8 फाइट जो ये एंड हुआ है वो कैसे एंड हुआ है? कैसे? लेफ्ट हुक, दैट्स इट, वही उसका ये है वेपन, ही हैज नो अदर वेपन, ही इज वेरी फ्लैट फुटेड, उसका हेड मूवमेंट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है बिल्कुल भी, एंड ही इज रिलाइंग ऑन हिज हैंड स्पीड एंड लाइक हिज लेफ्ट हुक, दैट्स इट. I mean, when you're, such a one-dimensional fighter, He's for not very a polished for as a a for boxer. a fighter like Davis, who's at such a high level, वो easily exploit कर सकता है इसको. And the thing is that Ryan, all the fighters, तो उन लोग का stats break down करता है, ठीक है? Like पहला तो मैं definitely कहना चाहता हूँ reach. डेविस का 28-0 और इसका 23-0, तो जो भी हारेगा ना बहुत दुख होगा। अरे undefeated, मैंने तेरे को फर्स्ट एपिसोड में क्या बोला था? It is very common in boxing to have like undisputed versus undisputed, undefeated versus undefeated. ये बहुत ज्यादा common है. But the thing is कि it like let's break down look at stats कि like the thing is कि Ryan Garcia has like reach advantage और वो ज्यादा लंबा है उससे. He stands at 5'10", मेरे जितना ही है. गार्सिया, हाँ. And you have वो लंबा है। भाई Ryan Garcia मेरे जितना ही है, 5'10". लेकिन दोनों में से वो लंबा है, वो बड़ी बात है। हाँ, exactly. And you have your Deontay Davis on 5'5", डेविस उतना कितना छोटा है, 5'5", like 5'5". वो की माने भाई मेरे मेरे सामने। जितना है मेरे सामने. Like again, if we stand हाँ, tall समझा next to each other, he'll look like you. I'll look बिग like जी। you. Yeah. So he definitely has the reach advantage, but भाई लेकिन उन लोग का ये सा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा क्या, हीव्स और पर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। वो बाकी सब ठीक था, लेकिन जब वो हीव्स पर्स bro, पे आया ना, मजा नहीं आया है। bro, तूने ये नहीं देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पूरा नहीं देखा। शट अप कर दिया उसने completely, किसने? like गार्सिया को, डेविस ने. Garcia was like he he's such a bad fighter. I can like end him in multiple different ways. He has no head movement. He gets like hit a lot. He was hit गार्सिया by बोल रहा था। he हाँ Garcia बोल रहा था कि he was hit by Leo Santa Cruz like इतने सारे टाइम. तो like Davis was like कि अच्छा तो Leo Santa Cruz के साथ क्या हुआ? And Leo Santa Cruz was knocked out by this guy. ठीक है? And he was standing right beside him. He's like कि नहीं, you're not a like power puncher. तेरे punch में इतना power वावर नहीं है. So he was like, do I hit harder than like Luke Campbell? And Luke Campbell is the guy who like stopped this guy. Like हराया नहीं था, but he definitely knocked him down. And Ryan Garcia was shut. He's like क्या बोलूं उसके बाद? And that's the reason why I see like Luke winning ये fight के अंदर. Like I really like I would definitely want like Ryan Garcia to win because he went out of his way to have this fight, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में बैठ नहीं रहा था ज्यादा जल्दी और डेविस के बहुत ज्यादा नखरे थे. और ये फाइट ना एक्चुअली सेंस बनाती भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ फैंस, इन टर्म्स ऑफ द होल स्टोरी लाइन, लाइक इसका कुछ बनता ही नहीं. But Ryan Garcia went out of his way to see I can actually fight legitimate fighters. I'm not just a YouTube or internet boxer that you all claim. But I honestly like I want him to win, but the thing is I know कि वो नहीं जीतेगा. And there is not even चौथा a प्रेडिक्शन। but it's like I don't see him winning at all. इसके अंदर कोई चांस नहीं बनता. And there are levels to this game और Ryan Garcia is not even close to Davis.
and I think like Davis beats him by a लेकिन margin. अभी अभी जिस हिसाब से एज वन यू मेंशन कि गार्सिया का मेन पॉइंट है कि वो लेफ्ट हुक से Hmm. खत्म करता है, तो अगर इतनी बार उसने लेफ्ट हुक यूज किया ही है तो इवन आई थिंक डेविस एक्सपेक्ट्स इट कि वो आएगा Yeah, उसके, exactly. तो इवन वो ट्रेन करेगा ना उस हिसाब से भी. Exactly. When that's what I told you. Ki when you're a one-dimensional fighter, it's very easy for someone who is at such a high level, who हम्म. has so much of experience, हम्म. to exploit it. And हम्म. like this guy, अपना Davis can take shots. उसका हम्म. problem नहीं है. ये Davis ऐसे ही can थोड़ी hundred टैंक percent, बोलते हैं yeah, उसको. 100% he can take shots and he'll keep moving forward. And I think even fight IQ comes into play. Like हम्म. Davis has a higher fight IQ than him. And as we've seen, like people with higher fight IQ have like won in such like combats. आई थिंक फ्लोइड मेवेदर एड्रेस दिस कि भाई अगर तेरे को यूट्यूब करना है तो यूट्यूब करिए. सेम चीज ये हर एक यूट्यूब बॉक्सर के ऊपर आया, मालूम क्या. Exactly. Abhi, the thing is that people are they and I hate how like Ryan is going to get so much hate even after like fighting this guy. अगर वो हारा तो भी. Like because like people expect him to lose, you know. But like 2 साल से वो ये फाइट के पीछे पड़ा था, वो 2 साल से डेविस के पीछे पड़ा था, and he was bound to make this happen. So it's like really good on him हम्म. कि डेविस के साथ वो फाइट कर भी रहा, ही एंटरिंग द होल रिंग, तो इट डेफिनेटली टेक्स गट्स बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं बनता था. हम्म. ही कुड हैव हैड लाइक इजियर फाइट्स एंड देन लाइक बिल्ट अप टू दिस. लेकिन एंड आई वुड लाइक टू सी कि जब जब अपन ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं ना कि भाई ये बहुत क्लीन विन है, सॉर्ट ऑफ हो ही जाएगा ज्यादा, लेकिन तभी अगर कोई जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं होता है. जैसे समझ अभी अपन ने दो प्रिडिक्शन किया, हाँ. डियाज वर्सेस पॉल में. हम्म. समझ इफ कोई भी चांस इफ डियाज विंस ही या फिर इसमें भी डीएस का नहीं करते गार्सिया क्योंकि विंस, डीएस का तो कंफर्म्ड है कि ही इज नॉट गोइंग टू विन. वो वो तो अभी वो चॉइस ही ऐसा है ना उसका, एग्जैक्टली. रिटायर्ड सब. एग्जैक्टली. But if you want to talk about this, गार्सिया वर्सेस डेविस. yeah, if Garcia wins, it's like a huge deal for him, right? हम्म. And I think it definitely will legitimize him as a boxer. बॉक्सर. Hmm. फिर उसके सर से वो यूट्यूब बॉक्सर. लेकिन ये सब लोग यूट्यूब बॉक्सर लोगों को कार्टून के ऐसा देखते हैं, मालूम क्या. I mean, it is what it is. They are like sort of. But at the end of the day, there's a difference. There is an artist and there is an entertainer. These guys are entertainers. समझा. Yeah. द सेम वे यूएफसी में मैग्रेगर आया था. छोड़ भाई, मैग्रेगर का तो ओपिनियन दूंगा, बहुत हिट मिलेगा अपने. मिल बिकॉज जाएगा. अरे द थिंग इज, वो छोड़, ये जब भी यूएफसी ने ये वीडियो डाला ना कि लाइक पाउंड फॉर पाउंड ये उन लोग का लिस्ट, तो देयर आर पीपल कंप्लेनिंग कि इसके अंदर मैग्रेगर क्यों नहीं है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट. सी दैट्स द थिंग, उसका फैन फॉलोइंग ही ऐसा है. इतना बड़ा है. सो दिस इज व्हाट यू नो bringing in casual does to a sport. ए, ए, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्या मैग्रेगर है कि नहीं. आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त भाई. ठीक है, तू लेवल 2 वाला ही रहेगा. आई एम एटलीस्ट लेवल 5 अगर लेवल 10 है तो. एंड विद दैट वी कंक्लूड दिस एपिसोड. अभी वी हैव टू मोर प्रिडिक्शंस बाय दिव्यांग. घर पर भेज दो, पैसा लगाओ, जीतो. वी कैन इवन स्टार्ट ऑनलाइन टिप देने का भाई, इस पे पैसा लगाओ, बुगी बन जाओ. भाई तो मेरे को लाइक कमीशन भेजो, अगर तुम लोग का प्रेडिक्शन भेजो रहे, 2 टका लूंगा मैं दलाली. और किस में से बेट लगाएंगे, बेटर में से. भाई वो तो मालूम भी रहेगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ये लोग लगाएंगे यूएफसी का.